Vande Anadi Avichinna Sri Sada Pida Guru Paramparam. Day before yesterday, I had been to the residence of Dr. Chidambaram. In the course of a discussion, he gave a very interesting anecdote I want to share with you. This happened in 1963. He went to Oak Ridge National Laboratory, and the Oak Ridge National University invited him to give a lecture. And the professor had already tutored the students what inconvenient questions should be asked to him. So he started giving the lecture. Then one of the students stood up and asked him, we are all Christians, we have only one God called Jesus. Muslims have got one God called Muhammad. But you Hindus have got as many gods as your Indian population. Why? He was not perturbed. Being Chidambaram, he was not perturbed. He just went to the blackboard, he saw a big circle, and then within that circle he saw another small circle. On the circumference of the circle he saw a still smaller circle. Then he asked the student, what is this circle? He did not ask what the circle represents. He asked what is this circle at the center? He told, sir, it is proton, sir. He said, what is circle at the periphery? He told it is electron, sir. Then what is it? He told it is hydrogen atom. Then he asked them, okay, what is the size of the hydrogen atom? The size of hydrogen atom is decimal point followed by 7 zeros and 1. If you can represent the nano diameter of an atom in a few centimeters, I call it an atom. What is wrong? The infinite Brahman, we call it gods in different names. The professor disappeared from that. But this is actually happening. If we go through, mythology I will not go through. In the beginning of 20th century, our Ramakrishna Paramahamsa, after offering puja to Kali at the Dakshineshwar temple, and also after offering bhogam, he requested the Kali Ma to take the bhog. That time one cat came inside the sanctum sanctorum. Oh, you have come, and he gave. To the consternation of the authorities of the temple. After 40 years back, our Parameshwar Guru Chandrasekhar Balaji Swamigal was going towards Saradambal temple with puja materials in his hand. Normally, if you are gone, you will see there is one entrance on the southern side of the temple. That straightway take them to Shakti Ganapati, and then after worshipping the Ganapati, they go to the main temple. When he was about to enter, one cow was just lying on the entrance. He immediately sat down and offered puja to the cow. When the puja was over, the cow got up, he did a circumambulation and then prostrated before the cow. He was going back to his abode. The people who came said, you have not gone to the temple. No, I had done puja to Saradambal. There is no need for me to go inside. See, that is our Indian culture. The same thing happened to Vittala also. When Vittala went to the devotee's house, the devotee put a Vittal, that is brick. You wait here, let me finish my job with my parents. He waited like this. That is the Vittala we are having. And that has cultivated the Bhakti movement almost for 500 to 600 years, simultaneously in Maharashtra, and they're still going on now. And you know, everybody goes to the Varkavis, they go to Panduranga, walking. They don't take anything for Kana, Pina, Sona. Everything is provided by the people, happily. And you will be surprised that in my hospital in BARC, there are 5 to 10 Varkavis. I tried to contact them. One of the Varkavis was close to me. I asked him, why you put a kumkum here? That is, we are all Varkavis. You come, we have got Ganeshkumar Swami Ji will do the performance Ashada Ekadashi, and he was very happy, but then he has also gone to Panduranga. So that is our culture, and I am very happy to have Ganeshkumar again this year, and I am taking a promise from him that he will do the performance next year also.
Jaja Gupta, sir. Jaja Gupta. I request Justice Radha Krishnan to come and say a few words on this auspicious occasion. Justice Radha Krishna ji is one of the senior most judges of the Bombay High Court. He was the chairman of the Maharashtra Administrative Tribunal, and most importantly, highly spiritually acclaimed and in touch with me for the last almost 2 decades now. It's a wonderful day of Ashada Ekadashi, and we are the best person to sing all the Abhang on the occasion of Ashada Ekadashi, because it's been doing for several years. Even when I was a sitting judge, I have attended, he used to do it in Shivaji Park and various places. And that too today, we are lucky to have the program in our Sharadambal temple, and we will have a wonderful evening of remembering Lord Vithala. Wish you all the best. Wish you. जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां हे जनापयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं। आवाहनं न जानामि विसर्जनं। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। हे जनार्दन, रक्ष रक्ष जनार्दन। मन्दस्मितमुखम्बोजं महनीयगुणार्णवम् मधुरभाषिणं शान्तं सर्वभूतदयापरम् भक्तवात्सल्यझलतिं परमानन्दविग्रहं ज्ञानानन्दं प्रपन्नोऽस्मि सिद्धये समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदपं जगदनिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालाकल्दरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं।
विठ्ठलं 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 चिन्तयामि जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम 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 जय जय राम
बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा जय जय राम कृष्ण हरी 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 सर्व सुखाचे सर्व सुखाचे पाप रखुआ देवी वरु जय राम कृष्ण हरी जय 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 राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय राम कृष्ण हरी ஆஷாட ஏகாதசி நாம சொல்றதுக்கு வந்திருக்கோம். தெரியுமோ தெரியாதோ ராம கிருஷ்ண ஹரி மூணே நாமம். நீங்க ராகத்தோட பாடுறீங்களா தாளத்தோட பாடுறீங்களா யாரும் பார்க்க போறதில்லை. நாமத்தை சொல்லுங்க. இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஜெய ஜெய ராம கிருஷ்ண ஹரி ஜெய ஜெய ராம கிருஷ்ண ஹரி जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय 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 राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय 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 जय राम कृष्ण हरी नामाचा बाजार पंढरी नामाचा बाजार विठ्ठल नामाचा राम नामाचा कृष्ण नामाचा सद्गुरु नामाचा हो नामाचा बाजार पंढरी नामाचा बाजार नामाचा बाजार पंढरी नामाचा
यात्रा भरती आषाढ कार्तिक यात्रा भरती विठ्ठल हा सरदार विठ्ठल हा सरदार पंढरी नावाचा बदार नावाचा बदार पंढरी नावाचा बदार नावाचा बदार पंढरी नावाचा बदार गोपाळपुरी काळा होई गोपाळपुरी काळा होई हो गोपाळपुरी काळा होईला ह्या बुक्क्याचा बडीमार बुक्क्याचा बडीमार पंढरी नामाचा बजार हरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार बाळकदास लागली गोडी बाळकदास लागली गोडी बाळकदास लागली गोडी बाळकदास लागली गोडी धरिले हरचे द्वार धरिले हरचे द्वार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार हा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं वत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं विष्णुं वन्दे विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये सहितं कृष्णमाश्रये सहितं कृष्णमाश्रये सहितं
कृष्णमाश्रये विष्णुमाय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमाय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमाय जग विष्णुमाय जग विष्णुमाय जग वैष्णवांचा धर्म भेदाभेद प्रेम अमंगळ भेदाभेद प्रेम अमंगळ विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म ऐकजी तुम्ही भक्त भागवत ऐकजी तुम्ही भक्त भागवत कराल ते हित सत्य करा कराल ते हित सत्य करा कोणाही कोणाही जीवाच्या न घडो मत्सर कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर वरम सर्वेश्वर पूजनाचे वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म तुका म्हणे एका देहाचे अवयव तुका म्हणे एका देहाचे अवयव सुख दुःख जीव सुख दुःख जीव सुख दुःख सुख दुःख जीव सुख दुःख जीव सुख दुःख जीव सुख दुःख जीव भोग पावे कोणाही जीवाचा न गणो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे तुका म्हणे एका देहाचे अवयव सुका म्हणे एका देहाचे अवयव सुख दुःख जीव भोग पावे विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म वैष्णवांचा धर्म वैष्णवांचा धर्म धर्म
A few details about why we have all congregated here. Ashada Ekadashi is one of the most important event, not just in Pandurpur, not just in Maharashtra, not just in India, but all over the world. The Chaturmasya Vrata period, which is very auspicious for the ones who are spiritually inclined, starts from today. And possibly, like I mentioned yesterday, the only example in the entire world where whether you are a male, you are a female, you are a child, you are educated, you are uneducated, you have a status, you don't have this status. All of them combined together as a single fold and immerse themselves in this journey of bhakti, the journey of Chaitanya. And in this journey, nobody cares where we are, what we eat, where we walk. And today it's a standing example in the small suburb of Chembur that all the illustrious citizens who occupy this suburb have assembled today not to hear my program but to immerse themselves in the Nama of Vithala. We have Dr. Chidambaram, we have Justice Radha Krishna, we have Haureji, we have Pandit Satish Vyas, and we have Shri Jha, the former chairman of Rashtriya Chemicals and Fertilizers. I'm mentioning these names not to give importance to these individuals, but they are important in the society. But when they assemble in a single place and participate in this kind of a journey, that itself is a standing testimony to the power of Nama. And in this power of Nama, I want all of you to just forget oneself. Don't think who you are. Just for the next 2 hours, release your ego and just participate in this journey. And in this journey, let me tell you, because I have experienced it myself, so it is not a second-hand information, it is an experienced information. I run several industries, I run a television channel, but the pleasure that I get when I sing for this 1 or 2 hours is something that is immeasurable. And all that I'm asking you with folded hands, I beg you, please participate in this journey. You will suddenly realize that from today you are a different person, because you will start enjoying. That's what Tukaram says. Vishnumaya jaga Vaishnavansa dharma. Bheda bheda brahma amangala. Why are you considering that you are different, I am different? We are all not different. We are all the creation of God. Bheda bheda brahma amangala. Aika jidi tumi santa bhakta bhagavata karalaje hita satya kara. Whatever you do, do it with that sincerity and devotion, not to show off. Kona hi jivacha naghado matsara. Please don't hate any form of life, even if it's a small insect on the road. Respect it, give its way. After all, that is also God's creation. Can we create that insect? No. Even if we are the most illustrious scientist in the world, sir, but we cannot give life. We can play with what is available around us, which is all God's creation. But once that creation is done, we can only take it forward. But we cannot do that creation. And hence, Kona hi jivacha naghado matsara, varma sarveshwara puja nache. After all, tukam hane eka deha che avayava. We are all but limbs of a single body which is filled with Chaitanya, and we are all limbs performing different duties. Somebody thinks for us,
Somebody looks for us, somebody breathes for us, somebody speaks for us, somebody does the action with our hands, somebody walks with the leg. But all these are all limbs of a single common entity, and that entity is Vithala. And once you have this trust and belief, even if it is not correct, who cares? Just believe in it for the time being. 2 hours, forget yourself. Mahayoga Pithe Tathe Bhimarathyavaram Pundanikaya Datum Munindri Samagatya Tishtantamananda Kandam Parabrahmalingam Bhaje 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 Pandurangam Tatitvasa Samnila Meghavabhasam Rama Mandiram Sundaram Chittakasham Varam Krishtikayam Samanyasya Padam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Pramanam Bhavatmeritam Mamakara Nitam Bakkarabhyodruto Yena Tasmat Vidhaturva Satyai Dhrito Nabhikosha Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Spurat Kaustubhalankritam Kantadeshe Shriyam Justikeyurakam Srinivasam Shivam Shantamidhyam Varam Lokapalam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Sharat Chandra Bimbaranam Charuhasam Lasat Kundalankranta Gantastalankam Japaraga Bimbadaram Kanjanetram Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Vibhum Venunadam Charantam Durantam Swayam Leelaya Gopavesham Dadanam Gavam Vrundakanandadam Charuhasam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Kiritojvalat Sarvadik Prantabhagai Surairakshitam Divya Ratnairanadhyai Tribhangakruti Bharjamalnyavatamsam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Ajam Rukmini Prana Sanjeevanantam Parandhama Kaivalyanekam Turiyam Prasannam Prapannartihum Deva Devam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Bhaje Pandurangam Bhaje Pandurangam Bhaje Pandurangam. This is another great documentation of what happened in Pandharpur. Adi Shankara, the 4 disciples that he had, Hastamalaka, Padmapada, Sureshwara and Totaka, the first kshetra they visit as a guru and 4 disciples is Pandharpur. Till that time, Adi Shankara has created so many compositions, but not in the presence of the 4 Sishyas. Now, why does it become important? Because a great man shows you the way. Ajnana timirandhasya jnananjana shalakaya chakshur unmilitam yena tasmai Shri Gurave Nama. The greatness of a guru is, number 1, a non-reflected lustre. Sun has original lustre, moon has a reflected lustre. A guru is one who has an uncompromised, non-reflected lustre. Ajnana timirandhasya. And such a person, when you are wallowing in darkness because of ignorance, ajnana timirandhasya, jnananjana shalakaya, by a spark of a light which is equivalent to jnana, chakshur unmilitam yena, the one who suddenly makes you to have a shake in your body and open your eyes and realize the truth, that person is your guru. So the guru, along with the 4 Sishyas, visits Pandharpur Kshetra and composes this Ashtaka that I just sang. Because the very first documentation of what was Pandharpur, what is the greatness of Lord Vithala, is documented in these 8 paragraphs that Adi Shankara gave us. He defined it as a Yoga Pitham, Maha Yoga Pithe, Tate Bhimaratya, on the banks of the river Chandrabhaga. Tate Bhimaratya, Varam Pundarikaya Datum Munindraihi.
When Krishna comes to give darshan to Pundalika, Pundalika says, please wait here, I'll give you a brick as an asan and let me complete my service to my parents. Come back and then have darshan with you. Even he did not hurry for a darshan, but he'd rather do his duties. So Maharashtra teaches you why is it important not just to do anushtanas, but to perform your duty whatever you are. Whether you are a shimpi, whether you are a carpenter, whether you are a builder, whether you are an ordinary person, first perform your duties and then God will automatically come to you. This great truth, which is very relevant today in modern society, is something that is given by Adi Shankara. Mahayoga pite tate bhimaratya varam pundarikaya dhatum munindraiki samagatya tishtantam anandakandam parabrahmalingam bhaje pandurangam. How does he stand? Thaditvasasam Neela Meghavabhasam Rama Mandiram Sundaram Chit Prakasham. When you visit that Garbhagraha, when you visit that Sanctum Sanctorum, it is like a lightning from the blue skies. Thaditvasasam Neela Meghavabhasam Rama Mandiram Sundaram Chit Prakasham Varam Twishtikayam Samanyasya Padam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam. Then he says, Pramanam Bhavad Beritam Mamakanam Nitambak Karabhyam Dhrito Yena Tasmat. Vidhaturva satyai dhrito nabhikoshaha parabrahmalingam bhaje pandurangam. He gives you a sense of confidence that whatever are your difficulties, don't worry. In this bhava, your difficulties are only up to your hip. So he keeps his two hands on his hip and gives you a pramana. Pramanam bhavad beritam mamakanam nitambak karabhyam dhrito yena tasmat vidhaturva satyai dhrito nabhikoshaha parabrahmalingam bhaje pandurangam. Like these 8 paragraphs are all gems of knowledge, repository of knowledge for the modern world to understand. So Adi Shankara gave this beautiful Panduranga Ashtakam, and with this we will follow with an Abhang which is exactly the opposite. Adi Shankara was a highly enlightened, evolved guru who taught us the essence of Sanatana Dharma. But there was an ordinary villager somewhere near Pandharpur village called Chokha Mela. And this Chokha Mela was so ordinary that his job was to peel the skin of a dead animal. And such a person, look at the enlightenment that such a person can match Adi Shankara. And this Chokha Mela sings a song which is something like Abira Gulala Udhalita Ranga Nathagari Gache Maza Saka Panduranga. Now Chokha Mela does not know anything. What does he know? He knows nothing. He can't even enter a temple. Shivu kase umbara thyala ami jati hina. I can't even touch the steps of your temple, man. Ami jati hina. Pahu kase rupa dola thyata ami lina. Ubhe paya risi danga aikata abhanga day. Now udla kuda vara mudiyadeda Krishna. Adi Shankara paaditu beta Mahayoga pite nallama paadina enak onnume puriyaliye. நான் கோவிலுக்குள்ள வர முடியாது. என்ன பண்ண முடியும்? கோவிலுக்கு வெளியில நின்னுட்டு உன்னோட திருஷ்டியை பார்க்க முடியும்டா கிருஷ்ணா பண்ட் விட்டலா. ஆமி பாஹு ரூப பாஹு கசே ரூப டோளா தியாता ஆமி லீன உபே பாய ரிசி தங்க ஐக்கதா அபங்க. So what do I do next? ஆஷாடி கார்த்திகி பக்த ஜனயேதி. இந்த ஆஷாட ஏகாதசி வந்துடுத்துனா எல்லா பக்தாளும் வர போறா. ஞானேஸ்வரர் என்ன, நாமதேவர் என்ன, ஏகநாதர் என்ன, துக்காராம் மகாராஜ் என்ன, சாவுதாமாளி என்ன, ஜனாபாய் என்ன, இப்படி எல்லா சந்தனும் ஆஷாட ஏகாதசிக்கு பண்டரிபுரத்துக்கு சந்திரபாகா நதி தீரத்துக்கு வரப்போறா. அந்த இடத்துக்கு நாம் போலாமே, யாரும் தடுக்க முடியாது. கோவிலுக்குள்ள போறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. முத்துகிருஷ்ணன் விடமாட்டார் கோவிலுக்குள்ள. ஆனா கோவிலுக்கு வெளியில நான் என்ன வேணா பண்ணலாமே, யாரும் என்ன தடுக்க முடியாது. வாழ வண்டி காவு ஆம்ஹி வாழ வண்டி நாச்சு. நான் பாடுவேன், ஆடுவேன், யார் என்ன தடுக்க முடியாது. வாழவಂಟಿ ನಾಚು ಆಮಿ ವಾಳವಂಟಿ ಗಾವು ಚಂದ್ರಭಾಗೈಚ ಪಾಣ್ಯಾನೆ அங்க அங்க நாவு. எனக்கு ஆசை தீர அந்த நதியில் நான் குளிப்பேன். ஒரு விதமான கண்ட்ரோல் கிடையாது. இப்படி ஒரு பிரமாதமான அபங்கம் சோகா மேளர் எழுதினது, அதை பாடுறோம். அபி
उधळीत रंग नाथागरी नाचे माझा नाथागरी नाचे माझा 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 सखा पांडुरंग नाथागरी नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग शिव कसे उंबरठ्यान आम्ही जातीहीन शिव कसे उंबरठ्यान आम्ही जातीहीन पाहू कसे रूप डोळा त्यात आम्ही लीन पाहू कसे पाहू कसे पाहू कसे रूप डोळा त्यात आम्ही लीन उभे पायरी श्री गंगे उभे पायरी श्री गंगे उभे पायरी श्री गंगे ऐकता अभंगे नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग वाळवंटी गाव आम्ही वाळवंटी नाचू 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 चंद्रभागेचा पाण्याने अंग 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 नावू चंद्रभागेचा पाण्याने चंद्रभागेचा पाण्याने चंद्रभागेचा 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 पाण्याने अंग अंग नावू चंद्रभागेचा पाण्याने अंग अंग नावू नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथागरी नाचे माझा सखा पांडुरंग वाळवंटी गाव आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेचा पाण्याने अंग अंग नावू विठ्ठलाचे नाव घेऊ विठ्ठला विठ्ठलाचे नाव घेऊ विठ्ठलाचे नाव घेऊ विठ्ठलाचे नाव घेऊ होऊन एक संग नाथागरी
கையை தட்டுறோ தட்டலையோ எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது. ஆனால் ஒரு கவலை, நீங்களாம் நாமம் சொல்கிறீங்களாங்க எனக்கு கவலை. கையை தட்டுறது எப்போ இப்போ ரொம்ப காமன் ஆகிடுது. ஒன்றுமே இல்லைன்னாலும் சும்மா நல்லா கை தட்டுறோம். கையை தட்டினா பணம் தரா, அது வேற விஷயம். வார்க்கரி சம்பிரதாயத்தில் ஒரு விதமான வித்தியாசங்கள் கிடையாது. இது கர்நாடக சங்கீதத்தை சேர்ந்ததா, இது ஹிந்துஸ்தானி சங்கீதத்தை சேர்ந்ததா, இது சந்தர் எழுதினதா? ஆனால் சந்தர் எழுதினது மட்டும்தான் அபங்கம். ஏதோ மராட்டி பாட்டை கத்துன்னு நம்ம பாடினோம்னா அது அபங்கமாக முடியாது. அதுக்கு வேண்டிய சைத்தன்யம் அங்கே இருக்கான்னு ஒரு கேள்விக்குறி. தப்புன்னு சொல்லலை, ஆனால் அபங்கம்னா சந்தர்கள் எழுதினது மட்டுமே அகம். அபங்கத்தில் மூத்தவர் கோரா கும்பார். சந்த் ஞானேஸ்வரருக்கும் வயதில் முதிர்ந்தவர் கோரா கும்பார். கோரா கும்பார் என்கின்ற சந்தர் அபங்கம் எழுதல, ஆனால் அந்த அபங்கம் எழுதுவதற்கு வேண்டிய உற்சாகத்தை கொடுத்தவர் கோரா கும்பார். ஏன்னா நாமதேவர் ஒரு முறை எங்கு நிவிருத்திநாத், ஞானேஸ்வர், சோபான், முக்தாயி மற்ற இதர சந்தர்கள் அமர்ந்து போஜனம் செய்கின்றார்களோ அந்த இடத்துக்கு நாமதேவர் வரார். என்ன நினைச்சுன்னு வரார்? நான் பெரிய ரொம்ப சிரேஷ்டமான பக்தன், பகவானுக்கே எங்கள் ஐயால சாட்சாத் பால் கொடுத்துருக்கேன். அந்த கதை நான் வேற ஒரு நாளைக்கு சொல்கிறேன். அந்த ஒரு தம்பத்தோட வரார் அந்த சந்தர்களை பார்க்கறதுக்கு. அங்கே வந்த உடனே புரியறது, ஓஹோ இவருக்கு சந்தரானாலும் அகங்காரம் குறையல நாமதேவருக்கு. அப்போ முக்தாயி ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறான். சொல்கிறான், அண்ணா நாமதேவர்னு யாரோ வந்திருக்காராம், பாட்டெல்லாம் எழுதுறாராம், அவர் ஏதோ பால் கொடுத்தார், விட்டலன் குடிச்சார்னு ஏதோ கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கேன். ஆனால் இங்கே நம்ம கோரா காக்காவை கூப்பிட்டு அந்த வெந்த பாண்டமா வேகாத பாண்டமானு ஒரு நிச்சயம் பண்ணலாமான்னு. அதாவது கோரா கும்பார் ஒரு பாண்டம் செய்யும் ஒரு குயவர். அவள்கிட்ட ஒரு கட்டை இருக்கும், ஒரு குச்சி, தாப்பின்னு சொல்லுவாள் மராட்டியில். அதை வச்சு அந்த பாண்டத்தில் தட்டினோன்னா அந்த பாண்டம் சரியாக வெந்திருக்கா வேகாதாதான்னு அந்த சத்தத்திலேருந்து தெரியும். உடனே கோரா கும்பார் அந்த தாப்பி எடுத்து இந்த நிவிருத்திநாதர் தலையில் தட்டுறார், வெந்த பாண்டம். ஞானேஸ்வரர் தலையில் தட்டுறார், வெந்த பாண்டம். சோபான் தேவ் தலையில் தட்டுறார், வெந்த பாண்டம். நாமதேவர் தலையில் தட்டுறார், வேகாத பாண்டம். நாமதேவருக்கு வரதே கோபம். விட்டலா, என் நாக்கில் உன் நாமத்தை தவிர வேற எந்தது வந்தது கிடையாது. இந்த சின்னஞ்சிரிச்சுகள் என்னை இது மாதிரி அவமானப்படுத்துறாளே, நான் வேகாத பாண்டமா? எவ்வளவு ஒரு எனக்கு பக்தி உன் மேலே, எவ்வளவு உன்னோட கட்டாட்சம், எவ்வளவு உன்னோட ஆசீர்வாதம், எவ்வளவு உன்னோட அனுகிரகம், இவ்வளவு இருந்தும் இந்த சின்னஞ்சிரிச்சுகள் விளையாட்டாக எனக்கு வேகாத பாண்டன்னு சொல்லிட்டாளே. ஓடுறார் பண்டரிபுரத்துக்கு விட்டல பார்க்கறதுக்கு. விட்டலன்ட்ட போறார். விட்டலா, இவ்வளவு பெரிய சந்தர்னா, வயசுல முதிர்ந்தவன், அங்க போனா என்ன வேகாத பாண்டன்னு சொல்லிட்டாக்கு விட்டுறாரா? எப்படி என்னாலும் இதை தாங்கிக்க முடியும்? விட்டனன் சொல்றார், நாமதேவர் ஒரு நிமிஷம், உனக்கு இன்னும் குரு கிடைக்கல. ஒரு குரு கிடைச்சா தான் அந்த அனுபவங்கள் ஒரு லெவலுக்கு அந்த அனுபவங்கள்லேருந்து நாம் படிக்கும் பாடங்கள் சரியா தவறா என்று புரிந்து கொள்ளும் அனுபவம் ஒரு குரு கிடைத்தவுடன் தான் கிடைக்கும் என்று கூற நாமதேவர் ஓடுகின்றார் விசோபா கேச்சர் என்கின்ற குருவிடம். விசோபா கேச்சர் என்று ஒரு வயதான முதிர்ந்தவர், ஒரு 90 வயசு இருக்கும். நாமதேவர் ஒரு அகங்காரத்தோட ஒரு ஆவேசத்தோட ஓடுறார் அந்த விசோபா கேச்சர்கிட்ட. ஏன்னா விட்டலன் சொல்லிருக்கான், அந்த குரு அவரை போய் அடைய, அவர் உனக்கு ஞானம் தருவார். ஓடுறார். பார்த்தா ஒரு கோவில், அந்த கோவிலில் சிவலிங்கம், சிவலிங்கத்தின் மேலே காலை வச்சுக்கிண்டு ஒரு கழவர் படுத்துட்டு இருக்கார். வரதே கோவம் நாமதேவருக்கு. யோ, வயசாருது, மூளை இல்லையா உனக்கு? இவ்வளவு பெரிய சிவலிங்கத்துக்கு மேல காலை வச்சுட்டு உட்காந்து இருக்காளே, அந்த காலை அங்கேருந்து எடுங்கோ. உடனே அந்த வயசானவர் சொல்றார், நாமதேவா, நீ வந்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து, ஆனா எனக்கு வயசாயிடுத்து. அந்த இது பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல சொல்லணுமா? So Visoba Kechar, who is the elderly person who is 80 plus, is sitting with his leg on the Shivalinga.
So Namdev comes with tremendous anger and he says, "Oh my dear elderly person, don't you have any sense? Are you stupid? You're keeping your legs on the Shivalinga. Is it not blasphemy?" So that old man says, "Oh Namadeva, yes, I do understand it's blasphemy. I can't keep my leg on the Shivalinga. But do one thing, I'm so old that I can't lift my leg and keep it in a place where there is no Shivalinga." So Namadeva in that anger lifts that leg and puts it on the next side. A Shivalinga comes out from there. He puts that leg, catches that leg and puts it somewhere else. There a Shivalinga comes. And he turns and puts it this side. A Shivalinga comes there. That is when Namadev realizes that there is no place on this earth where God does not exist. And this truth was manifested to Namadeva by this great Guru Vishobha Kechar. But the original story refers to Gora Kumbhar, who was the architect of this story, who first hits Namadeva's heads with that thapi and determines that this is a uncooked pot. And this great saint Gora Kumbhar came from a village called Ter. And my friend Pandit Satish Vyas sitting here hails from this same village. Pandit Satish Vyas's father, Pandit C.R. Vyas, was a great singer, and this entire family must have done thousands of punyas in their life to have taken birth in that great village where Sant Gora Kumbhar stayed. And Satish ji, I have performed there in Ter, and what a place, what a village. And we realized if this Chaitanya, this great state has given birth to so many saints, it is because of that tremendous, passionate bhakti that it has on God. They don't care about anything else. If you go to Ashada Ekadashi today, people must have walked for 40 days. Imagine, for 40 days they would have walked with barefoot on the road, in the rain, in the sun, in the cold, food, no food. And in that discomfort, they would have walked for 40 days. For what? For a 2-second darshan of Vithala. What must be the passion? Can we ever get that level of passion? That is the level of bhakti. That is what teaches us that shed your ego, forget it. After all, you are nothing but a small creature in the overall scheme of things. Nobody has even understood today what is the universe. Or what is the size of this universe and what are we talking of? So this great truth of wanting to have a guru was started by Sant Gora Kumbhar. Namdev runs to Vishobha Kechar, gets him as a guru, and that is when he sings the Abhang that we are going to sing today. त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवीणं त्वमेव, त्वमेव शैवं मम देव देव, मम देव देव. அழுந்தொரு மனைக்கு வன்னை அறிவிலது ஓடியாடி விழுந்தொரும் எடுக்கும் அப்பல், விளையாடும் பாது தோழல் சொந்தமாய் எடுப்போர்க்கு எல்லாம் குழந்தை. இப்படி உலவும் நம் சத்குருநாதன் வாழி 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 வாழி, சத்குருநாதன் வாழி 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 வாழி. எல் மனத்துதித்தவனே தபோவனத்திருப்பவனே, எல் மனத்துதித்தவனே தபோவனத்திருப்பவனே, எல் உளத்தில் உமையொரு தளத்தில் நினைத்தால் அனைத்தும் தருபவனே, எல் உளத்தில் உமையொரு தளத்தில் நினைத்தால் அனைத்தும் தருபவனே, எல் மனத்துதித்தவனே. ஷீனத்தை வெல்றவனே, அறமெனும் தனத்தில் நின்றவனே, ஷீனத்தை வெல்றவனே, அறமெனும் தனத்தில் நின்றவனே, இந்த ஜகத்தின் ஆண்டவனே, ஈக பர சுகத்தை தருபவனே, எல்வர் துதித்தவனே. கிடைத்த கரியோனே, சித்தலிங்க மடத்தில் உரைவோனே, இந்த இடத்தும் இருப்போனே, பவ சங்கடத்தை அறுப்போனே, அப்பனுக்கு உபதேசம் செய்த ஞான சுப்பனும் நீதானோ, சுவாமி மலையில் அப்பனுக்கு உபதேசம் செய்த ஞான சுப்பனும் நீதானோ, சுவாமி மலையில் அப்பனுக்கு உபதேசம் செய்த ஞான சுப்பனும் நீதானோ, அந்த முப்பிடிய மலை முயன்று புசித்த கண்ணப்பனும் நீதானோ, முப்பிடிய மலை முயன்று புசித்த கண்ணப்பனும் நீதானோ, ஒப்பிலவாமணியே ஒப்பிலவாமணியே, நீ எப்பவே வந்தருள்வாய், நான் எப்பவும் போற்றிடுவேன், எல்லப்பனை ஆண்டிடவா, திரித்த சடையுடன் கரித்தொருரித்து சிரித்து நின்றவன் நீ, திரித்த சடையுடன் கரித்தொருரித்து சிரித்து நின்றவன் நீ, திரித்த சடையுடன் கரித்தொருரித்து சிரித்து நின்றவன் நீ, விரித்த சடையுடன் கரித்தொருரித்து சிரித்து நின்றவன் நீ, இருவுரத்தை எரித்தரு முகத்தை அருளி மனத்தை பறித்தவன் நீ, என் மனத்தை புகுந்திடுவாய், உன்னிருபதத்தை உகந்திடுவாய், ஆகவேனும் மதத்தை ஓட்டிடுவாய், அம்பிகை பதத்தை காட்டிடுவாய், என் நாட்டவரும் போற்ற எல் நாட்டினில் அவதரித்தாய், எல் நாட்டவரும் போற்ற எல் நாட்டினில் அவதரித்தாய், என் ஆட்டமதை நிறுத்தி ஞான நாட்டமுடச் செய்தாய், தைக்கிருத்திகை உதித்தவர், தைக்கிருத்திகை உதித்தவர், என்னை திருத்தி அமைக்க வந்தவர், தைக்கிருத்திகையில் உதித்தவர், என்னை திருத்தி அமைக்க
पावन निर्मळ जीवन तिथविण पावन तैसा गुरु जाण साधकासी नामा म्हणे गुरु कृपेची आबळे 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 मूर्ख ही तरेल भाक माझी मूर्ख ही तरेल भाक माझी वाचिता अध्यात्म जाणिता ही अर्थ वाचिता अध्यात्म जाणिता ही अर्थ गुरु गुरुविण व्यर्थ सर्व काही गुरुविण व्यर्थ सर्व काही गुरुविण व्यर्थ सर्व काही. There could be some in the audience who may not understand Marathi in its literal form. I mentioned about the value of a guru. So Namdev says after he has met his guru Visubha Khechar, Vachita Adhyatma, Janita hi Artha. I have read all the scriptures. I have understood everything. Guru Vina Vyartha Sarvakahi. You cannot attain completeness unless a guru tells you the sukshma artha of those scriptures that you have read. Reading scriptures is not reading language. Reading scriptures is to understand the potent meaning which is hidden inside. It may not manifest in terms of words. If you just read the words, it might give you an impression that you have understood. But if you have to really understand the inner meaning, you need a guru who will explain the hidden sukshma artha. Karavajo Adi Sadguru Prasanna. If you have found a guru of that caliber, first prostrate, surrender yourself. Karavajo Adi Sadguru Prasanna. Tyachiya Kripene Sarvasadhe. Even if you are a nobody, if the guru decides that you must be made an enlightened person, within a second he can do it. It just takes a second. Shall I tell you how it happened? Adi Shankara had 4 Sishyas. Hastamalaka, a very knowledgeable person. Padmapada, again a very knowledgeable person. Sureshwara, again an extremely knowledgeable and a grammar person. And in fact, the Sringeri Parampara starts from Sureshwaracharya. And there is a 4th one who is a Totaka, who knew nothing. He was only doing service to his Guru Adi Shankara. And this Totaka once was on the riverbed trying to wash the clothes of the Guru and the utensils. And that is when Adi Shankara sits under the alamaram and wants to start the lessons. And when he does it, he realizes that Totaka has still not come back. So the Guru waits for his disciple to come. And the disciples who were assembled already started laughing and mocking. Totaka knows nothing. Why should the Guru wait for the disciple to come? And I'm sure this happens to every Guru who teaches, whether it is Vishwanath Shirodkar, whether it is Seemaji. When they teach to the students, every student had an impression that I am the most important student. I am the one who can understand things well. But the Guru knows to what extent that student has unfolded. They decide what is right and what is wrong. So when they wait for one not so accomplished disciple, the intelligent ones, or who think that they are intelligent, try to mock. Why should I wait? So a similar thing happened. The Guru had started the lessons and Totaka had not come. So the Guru decides to teach a lesson to these disciples. So the moment Totaka comes to join the lessons, he has brought all the puja patra,
He keeps everything, he does a namaskara to Guru with utmost sincerity, fully realizing that he is very ignorant, he does not understand the Vedas, he does not understand the Vyakarana, and he knows his limitations, but his ultimate surrender to the Guru was complete. And that is when Adi Shankara looks at him. For those of you who have time, please come back to the temple later and look at those photographs which gives you the complete history of Adi Shankara. All these photographs are kept here not as a decorative piece, but they are kept here for you to acquire that knowledge. And this temple is unique in its own way that all this has been demonstrated all around. So I want Muthukrishnan-ji to allow all the youngsters to come here and somebody should tell them the stories of each of these photographs. So coming back to our story, Adi Shankara decides that he must do a trick so that the disciples will understand that if the Guru decides something, it will get done. So he looks at Totaka and in that mere sight transfers all the knowledge. And within seconds, Totakacharya starts singing, Vidita kila shastra sudha jaladhe mahitopanishad katithathanide hridaye kalaye vimalam charanam bhava shankara deshikane sharanam karuna varunalaya palayamam bhavasagara dukkha viduna kritam rachaya kila darshana tattvavidam bhava shankara deshikane sharanam bhavata janata suhita bhavita vijabodha vicharan charumate kalayeshwara jiva vikirikavidam bhava shankara deshikame sharanam bhavayeva bhavanidhime nitara samajayata chetasi kautukitam mama varaya moha mahajaladhim bhava shankara deshikame sharanam sukrute dhikrute bahudha bhavatu bhavita samadarshana lala satam atidhiramimam paripalayamam bhava shankara deshikame sharanam jagati mavitum kalita kritayo vicharanti maha satchalata ahimam sturi vatra vibhasi guru bhava shankara deshikame sharanam guru pungava ketanate samatam mayatam nahi kopi sudhi sharanagata vatsala tattvanidhim bhava shankara deshikame sharanam vidita namaya vishadaika kala nacha kinchana mancharamasti guru dhrutameva videhi kripam sahajam bhava shankara deshikame sharanam. Now these 8 paragraphs, no, you are clapping for the Guru. The ability of a Guru to convert a disciple whom the world thinks is stupid. But the Guru knows that that disciple has an ability to carry forward the tradition. And that is what Namdev says. Vachita adhyatma zanita hi artha guru vina vyartha sarvakahi karavajo adi sadguru prasanna tyachiya kripene sarva sadhe. Tyachiya kripene. இது நிறைய பேருக்கு புரியாத வார்த்தை. கிருபை என்னது சார்? ஒரு குருநாதர் உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றாருன்னா என்ன அர்த்தம் இல்லை? அதில் ஏதாவது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கா? கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர். அந்த காலத்தில் நாங்கள் சொல்லும் பொழுது சிரிப்பா, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர், ஹவு கேன் இட் ஹேப்பன் வித்வுட் அ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி? இப்போ நம்ம ரிமோட் பார்த்த உடனே புரியுது, ஓ எஸ், வி கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்டீட் பவர் டு another physical object without really having to physically touch it. So now we realize the power of kripa. So when you want kripa, the Guru's kripa is utmost, anugraham, utmost. சன்னிதானங்கள் இவாள்லாம் இங்கே வரும்பொழுது அவளுக்கு நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணும்பொழுது அவள் ஒரு க்ஷணம் நம்மளை பார்த்தா போகிறோம், அந்த அனுகிரகம் நம்மளுக்கு கிடைச்சுடுறது. அந்த அனுகிரகம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கணும் நமக்கு. நம்பிக்கை இல்லாமல் நமஸ்காரம் பண்ணினோன்னு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அது 10 தடவை விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. சட்டையெல்லாம் அவுத்துட்டு விபூதிலாம் இட்டுண்டு நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனால் மனசார ஒரு செகண்ட் நமஸ்காரம் பண்ணினோம் நமது குருநாதனுக்கு, யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த குருநாதர், அந்த க்ஷணம் அவள் ஒரு தீட்சா அவள் நம்மளுக்கு பார்வை பட்டு கொடுத்துனா அடுத்த க்ஷணம் யோக யாக தப்பே சித்த சுத்த ஹோய. யோகம் பண்ணுறோம், தப்பம் பண்ணுறோம், என்னெல்லாமோ பண்ணுறோம், அதனால புத்தி சுத்தமாகலாம். ஆனால் குரு வீண நயே மோக்ஷஹாத்தா ನಿರ್ಮಳ ಜೀವನ ತೀರ್ಥಾವೀಣ ಪಾವನ ತೈಸಾ ಗುರು ಜಾಣ ಸಾಧಕಾಸಿ ನಾಮಾಂಹಣೆ ಗುರು ಕೃಪೇಚಿಯ ಬಳೆ
Murkha hi tarela bhaka maja. Namdev is giving a challenge. I am telling you that even if you are a murkha, if the Gurunathan has kripa on you, you will get enlightenment. Ratna jadita simhasanavari shobhe. Kai tatti number. Seema Shirodkar, one of the senior most harmonist, and possibly this is the second time she is playing for us. But I have a great fascination for her Shivaranjani. As such, that raga is very beautiful, but she even makes it more beautiful. Ratna jadita simhasana varisho bheraghunandana. Ratna jadita simhasana varisho bheraghunandana. Vamabagi Sitabai Jagat Janani Majhi Ai. Vamabagi Sitabai Jagat Janani Majhi Ai. Pashat Bagi Lakshmana Pudhe Anjani Nandana. भरत शत्रुघ्न दो भाई चामर डाल की ठाई ठाई नील जांबवंत सुग्रीव अंगत विभीषण भक्त देह बुद्धि निणो कही दासंकित रामापाई. दासंकित रामापाई दासंकित रामापाई दासंकित दासंकित राम विसरू नको तू संसारी रे विसरू
भजन गुणकारी मनुजा राम 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 भजन गुणकारी वनात येऊनी आज राघव आपुलकीने घ्यावा मेवा धन्य जन्म हा माझा भावा तुझीच सेवा करील शबरी राम भजन गुणकारी पदस्पर्शाने पाषाणाला पदस्पर्शाने 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 पाषाणाला जीवन देता वदली अहिल्या दर्शन घडले देवा मजला नाव तुझे रे मजला तारी राम 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 भजन गुणकारी राम कृपेचे दर्शन घडता संसारातील हरतील चिंता खंत कशाची करुणी आता भजन करावे राम मंदिरी राम भजन गुणकारी राम 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 भजन गुणकारी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय 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 श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम
the last Bhairavi. आज सखी सत्संगत में मिलके, आज सखी सत्संगत में मिलके, तो आज सखी सत्संगत में मिलके प्रभु के गुणगान करो। आज सखी सत्संगत में प्रभु के गुणगान करो। आज सखी, आज सखी, आज सखी सत्संगत में मिलके प्रभु के गुणगान करो। मिलके प्रभु के गुणगान करो। मिलके प्रभु के गुणगान करो। कली में हरि नाम समान बड़ो और कोई उपाय नहीं जग में। कली में हरि नाम समान बड़ो और कोई उपाय नहीं जग में। सब पाप निवारण कारण है, सब पाप निवारण कारण है, भव तारण है मन में सुमरो। सब पाप निवारण कारण है, भव तारण है मन में सुमरो। आज सखी सत्संगत में मिलके प्रभु के गुणगान करो। बिना संत समागम ज्ञान नहीं, बिना संत समागम ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान न मोक्ष मिले कभी। बिना संत समागम ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान न मोक्ष मिले कभी। कर ले तप तीरथ दान धने, चहुधाम बीच भले विचरो। आज सखी सत्संगत में मिलके प्रभु के गुणगान करो। विश्व चराचर में परिपूर्ण, विश्व चराचर में परिपूर्ण चेतन ब्रह्म स्वरूप सदा। विश्व चराचर में परिपूर्ण चेतन ब्रह्म स्वरूप सदा। घट भीतर जान पहचान सही, ओ विश्व चराचर में परिपूर्ण चेतन ब्रह्म
सब संशय दूर करावत है, निज रूप लखावत है तन में। ब्रह्मानंद सुनो, ब्रह्मानंद सुनो, ब्रह्मानंद सुनो। गुरु ज्ञान सदा भव सागर दुस्तर पार करो। ब्रह्मानंद सुनो, गुरु ज्ञान सदा भव सागर दुस्तर पार करो। आज सखी संत संगत में लिखे प्रभु के गुणगान करो। आज सखी संत संगत में मिलके प्रभु के गुणगान करो। जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरि, जय 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 विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय 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 विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय 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 विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हर विठ्ठल 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 विठ्ठल। आता विश्वात्मके देवे एणे वाक यज्ञे तोषावे, तोषानि मग द्यावे, बसाय दान है, बसाय दान है। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाडो। भूता परस्परे पडो, मैत्र जीवाचे दुरिताचे तिमिर जावो। विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाभो। प्राणी जात वर्षते सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। अनवरत भूतळी भेटो तया भूता, चला कल्पतरूचे आरव। चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषाचे। चंद्रमे जे अलांछने, मार्तंड जे तापहीन। हे सर्वाही सदा सज्जन, सोय रे हो तू किंबहुना सर्वसुखी। पूर्ण होवुनीति लोकी, भजिजो आदिपुरुषी अखंडित। आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी योगी, दृष्टादृष्ट विजय होवावेजी। येत म्हणे श्री विश्वेश्वराव, हा होईल दान पसावो। येणेवरे ज्ञान देवो, सुखिया झाला, सुखिया झाला, सुखिया झाला। पुढती 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 या ग्रंथ पुण्य संपत्ती, सर्वसुखी सर्वभूती संपूर्ण होईजे, संपूर्ण होईजे, संपूर्ण होईजे, संपूर्ण होईजे, संपूर्ण होईजे। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम। जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। Sir, would you like to say something? Rajgopal, mic come. Our patient. Bhairavi. Thank you, thank you. Of course, it's always a great experience to listen to an Abhang performance by Shri Ganeshkumar. Of course, it's not the first time I'm listening to him, but every time there is something new, and every time he accompanies with such beautiful pravachan, explaining the meaning of the songs that we are very appropriately you call the Abhang Ratna. Shall I call you Abhang Maharatna?
So today also we had a wonderful, wonderful performance and such very good accompanying artists for him. Of course, personally I believe in Advaita Vedanta, but then that is too abstract. It has to find expression in different gods. There is Lord Ayyappa. Few days back I was in Puri Wow. looking at Lord Jagannath or Panduranga. Depends on, you can choose anything. That is the greatness of our Sanatana Dharma. They can choose any vehicle. And you explained so beautifully the role of the Guru, importance of the Guru. So thank you very much for making us all so happy and so excited and so, shall I say, spiritually enhanced. Thank you. Well, friends, it was a great pleasure having all of you. And many have come unexpected. But that's the power of Ashada Ekadashi. Imagine what would be happening there in Pandurpur. We were there just a month back. They performed inside the Sanctum Sanctorum. That's when I found some of this. I must make a special about this instrument, Morsing. Could you show that? This is a very unique, very small, handheld twang, a metallish twang, like a tongue. And with that, the kind of magic that Payanur Govindan has produced. Since I am also a cultural music enthusiast, I take this 2 minutes to explain to you what is this instrument. This is a metal, like a circle here, and with a small rod going in between, and between the two sides, there is a small metal which protrudes. And what is done, this is actually produced in Rajasthan, but it is played in Carnatic music. Imagine he is from Kerala and mastered this art of playing Morsing. And what happens is, through the control of breath, you do this and with your fingers strike this small protruding portion, and it creates a beautiful kind of a tone. And then you control your breath, and through the kunnakol solluvom nama Carnatic music la, and the kunna like bowl in Hindustani parlance, bowl ko they convert this into this twang, and that produces a new kind of a situation. And all that is happening with a simple small thing like this, and thanks to Payanur. So it's a confluence of new things. And since I was very actively engaged with the Fine Arts Society for the last 35 years, I always look for something that is different, something that is new, something that is innovative. And we must constantly keep the young minds occupied with new ideas so that they will start coming here. Now I am very pleased today, thanks to Vishwanath Shirotkarji, a great tabla player, that all his students are here, youngsters are here. It's so nice to see youngsters in the audience. And that is how this culture can continue. Otherwise, all this will go for a toss. So my compliments to Muthu Krishnanji for giving us this opportunity. And thank you very much, sir. Shri Gurubhyo Namaha. I have to thank Mr. Ganeshkumar. When I just told him, you must come to the temple and celebrate Ashada Ekadashi, he readily agreed last year. Last year, at the end of the program, I invited him for this year's program, he readily agreed. So following the previous footsteps, I am requesting Sri Ganeshkumar to book himself for the next Ashada Ekadashi also here. At least, as long as I am the manager of this temple, you please come. Who am I to decide? It's after all Vittal who ordains us what should be done, when, how, and in what manner. So I will convey your request to Vittala, and I will, whatever path he shows me, I will follow that. Thank you all very much. Thank you. You can't escape from me like that.
You cannot escape from me like that. I have the full Guru Kataksham, as he explained today. I have told him, and he blessed me that every year it will continue in Sringeri. Please, 1 minute, sir. Before we go to the sanctum, your friend, Mr. Mohan Subramaniam, has sent a nice gift for you.